So did you all try out the part that we had covered yesterday? Like we had covered views. What is a view? View is a virtual table which is built on top of the base table, right? It is created for reducing the complexity of the query, means to simplify the things, and also it provides security, right? When you are creating the view, you might skip the rows which are, quite important rows which you don't want others to be able to see. So what we can do is we can apply the join. We can only select the tables, the columns which everybody can see. We can skip the ones which we want to make secure. Correct? So that is the idea behind views. How to create the view? How do you create the view? Create view, view name, and as, and you provide the query there. Correct? और alter view से view alter भी हो सकता है. Drop view से आप view को drop कर सकते हो. After that we studied the concept of index. What is the purpose of index? Contains for fetching the data. Okay, correct. It will have, we can say index contains the key and the address to the particular record. Yes, it will improve the performance. It will fetch the data faster. What are the types of indexes we have? Yes, there are two types of indexes. What are those? Clustered and non-clustered index, right? So clustered index is created when we create the primary key on the table. And it is like in place indexer. मतलब जहाँ पे डेटा है वहीं पे इंडेक्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं. So data itself is sorted and kept organized with respect to the clustered index. So whenever we are performing the search, we are actually searching the actual data only. That is the clustered index concept. Whereas non-clustered index is the index file is maintained separately and the data is separate. So whenever we are searching, we will first search on the index file. Index file will be sorted and it will contain the address to the specific record. So you search the record, you get the address. It is like linked list. You search, you get the address and jump to the location where the data is present. That is the non-clustered index. How many clustered index and how many non-clustered index we may have? Clustered index is one and non-clustered index multiple we can have on one table. But we should not create many indexes on the table because that will again affect the performance of the application. After that, we moved ahead with the stored procedure concept. So what is the advantage of using stored procedure? Yes, what is the purpose of stored procedures? Performance will improve grouping of one or more SQL commands. Correct. We can group multiple SQL commands together. And why the performance improves? Why it improves the performance? Correct. The entire stored procedure is converted into binary. It is in the compiled form. So whenever we are executing, we directly execute. It does not perform the syntax check, etc. Again, that is the benefit of using the stored procedure. So it is recommended that if you are using a single query, then also you should prefer to use stored procedure rather than writing the query.
right? Then how to create the stored procedure? Create procedure. Name of the stored procedure, say my procedure. And if you have some parameters, you will be using at the rate, say a at the rate b is an integer, suppose. Now, what operation I want to do? So, suppose I want to perform the summation of this two. So, at the rate a plus at the rate b is the operation I want to do. So, I can simply write here print. Print शायद नहीं काम करेगा क्या? Select. ठीक है, ये बाद में देखती हूँ, उसका सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है मुझे. बट what we had covered in our previous session, that suppose I am passing an id over here. So we are going to pass the id. Select star from emp where as है क्या, as where eid is equal to at the rate id. And now exec, execute my procedure, and you have to pass the id over here with a space, so you can see the result of that particular information. ठीक है, ये कल हमने देखा था. Suppose you want yesterday we also saw that if you want to update the salary, you want to make some modifications on the salary, कुछ अगर मुझे changes करने हैं, so what we can do is we can use declare to create some variables. So at the rate sal is equal to, or we can just have it as float. हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए, एक सैलरी और एक डिस्काउंट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज एट द रेट सैल, सैलरी को क्या किया, सैल में डाल दिया. कौन सी सैलरी, जो उस आईडी को बिलोंग करती है. नाउ इफ एट द रेट सैल इज लेस देन से 25,000, then what we did, set at the rate discount is equal to at the rate sal multiplied by say 10% ना. तो 10% मतलब क्या हो जाएगा, या फिर एक और वेरिएबल नहीं लेना है तो हम सैल को ही मॉडिफाई कर देते हैं, सैल इज इक्वल टू 1.1 एल्स. ये 10% हो गया और ये मान लीजिए 15% हो गया. So after this we can say update emp set salary is equal to at the rate sal where eid is equal to at the rate id. अब क्योंकि हम existing procedure को change कर रहे हैं, so we should be using alter procedure. Now execute, अच्छा हाँ, एक मिनट, select star from emp where eid is equal to 1. उसका अभी कितना सैलरी है वो देख लेते हैं. इट इज 1300, 13,200 है. अब हमने ये स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया, एग्जीक्यूट माय प्रोसीजर, and we pass 1 as a parameter. So you can see, now can you see the modified salary coming up here?
So this part I think so everybody has understood. कल ये हमने देखा था stored procedure, सबको clear है? Also I told you that this parameter that we are using, that is called as input parameter. मतलब इसके थ्रू हम डेटा क्या कर रहे हैं, stored procedure को दे रहे हैं. Now we can also use another concept that is called as output parameter. So we, अच्छा उसके पहले किसी को कुछ पूछना है? Any doubt from the previous session? I also gave you one task, right, to create the quiz. How many of you have done that? 5 क्वेश्चन सबको बनाने को बोला था. D for done टाइप करो जिनका हो गया है. Everybody is done. Very good. Sorry हाँ, मैं वो लिंक आपको भेजना चाहती थी, वो मैं भूल गई. एक मिनट हाँ, कौन सा था वो? टेक क्विज है कि प्ले क्विज है, ऐसा कुछ तो एक वेबसाइट है. I think so it is play quiz. Quizzes. हाँ, ये है शायद से. Quiz hyphen maker. तुमने बनाया क्या इसमें ज्ञानेश्वर? हाँ, ये वाला वेबसाइट में बोली थी. दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसमें आप ना अपना खुद का, ये मैंने एक बनाया भी था, देखो. ऐसे आप एक क्वेश्चन इसमें अपना खुद का क्विज बना सकते हो, ठीक है. वन, सो लेट मी शेयर दिस लिंक ऑन द चैट बॉक्स. तो आप क्या करो, कल के लिए तैयार करो, है ना. सबको अपना अपना एक क्विज बना के रखेंगे उसमें. सो आई थिंक सो यू हैव टू क्रिएट योर लॉगिन ओवर हियर. मैंने ट्रेनर से शायद बनाया था. यू नीड टू रजिस्टर फर्स्ट. ये देखो यहाँ पे क्रिएट क्विज ऑप्शन आता है ना. ऐसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हो. क्रिएट ऑप्शन है क्विज. मल्टीपल चॉइस. हाँ, यहाँ पे देखो आप अपना क्वेश्चन टाइप करोगे. सो जस्ट फॉर डेमो. एंड यू नीड टू स्पेसिफाई योर आंसर्स हियर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. और इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है वो उसको टिक करना पड़ता है. ये अपन ने टिक कर दिया. और यहाँ पर सेव क्वेश्चन. ठीक है, ये ऐसे हो गया. क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन. यहाँ पे एक एक करके आप क्वेश्चंस ऐड करोगे, तो हर एक को 5-5 करना है. सो ऑल ऑफ यू विल डू इट. एवरीबॉडी, आई हैव शेयर्ड द लिंक. अपना प्रोफाइल उसमें क्रिएट करो, लॉगिन क्रिएट करो, फिर वो आप 5-5 क्वेश्चन बना लो. ओके. यस. सो कमिंग बैक टू द स्टोर. सो टुमारो वी विल हैव इट. ओके. एक बार तुम खुद ही प्ले करके देख लेना वो कैसे रन कर रहा है, ठीक है कि नहीं है. उसमें ना एक ऑप्शन है, एक मिनट, जस्ट जैसे क्रिएट अनदर क्वेश्चन.
अच्छा, ये करने के बाद ना जब आपका हो जाएगा तो किधर था वो ऑप्शन, प्रीव्यू क्विज, हाँ प्रीव्यू क्विज। लाइक दिस यू कैन, पार्टिसिपेंट्स व्यू में कैसा, पार्टिसिपेंट को कैसा दिखेगा वो भी आपको पता चलेगा। फिर ये बंद किया, इसमें प्ले क्विज का ऑप्शन किधर गया? यहाँ माई लाइब्रेरी में मोस्टली रहेगा, ये हमने बनाया है क्विज। ये मैंने ऐसे पहले बनाया था, शायद नाम वाम दिया था वो, अभी तो मैंने दिया नहीं कुछ नाम। ड्राफ्ट, हाँ अनटाइटल्ड क्विज, देखो ये अभी अनटाइटल्ड है, इसको नाम दे देते हैं। और इसमें ना एक प्ले करते समय कुछ तो क्लासरूम ऐसा ऑप्शन आता है, वही मुझे एक दिखाना था तुम लोग को, कहाँ पे रह गया वो ऑप्शन। See, there is, if you observe your quiz, you will observe there is an one option, जैसे ये मैंने पहले बनाया था, तो प्ले ऑप्शन है, लाइव क्विज। इसमें ना कौन सा है, क्लासरूम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, शायद से कौन सा था, नहीं तो वो टाइम का या क्लासिक वाला ले लेना, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। जस्ट टेस्ट इट, ओके, कोई सा तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करके करना, तो समझ में आएगा। जस्ट ट्राई इट आउट, हाँ अभी उसमें टाइम जाएगा, या मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं चेक करके बताऊंगी। ओके, okay, so this much everybody has understood. Now when we talk about the parameters in stored procedure, then we may have three types of parameters. One is in, the next one is output, and the third one is in out. Okay, so in is basically called as an input parameter. If you do not mention anything, it is considered as input parameter. सिर्फ वो इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और वो उसको हम, और ऑल्सो वी कॉल दिस एज रीड ओनली पैरामीटर। देन देयर इज आउटपुट पैरामीटर विच इज फॉर द आउटपुट, मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर से मुझे रिजल्ट बाहर लेना है, उसके लिए आउटपुट पैरामीटर कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज राइट ओनली पैरामीटर, एंड इन आउट इज बोथ रीड राइट, दोनों रीड और राइट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको, रीड और राइट? तो अभी हमने ये वाला देखा है, कुछ नहीं लिखेंगे तो इन पैरामीटर होता है। नाउ वी विल सी द आउट पैरामीटर कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मॉडिफाई दिस सेम स्टोर्ड प्रोसीजर। हमने आईडी दिया था यूजर को, और अब जो मॉडिफाइड सैलरी है वो मैं बोल रही हूँ मुझे आउटपुट में दिखाओ, मीन्स आई वॉन्ट टू फेच। हाँ, तो what is the concept behind this output parameter? Important point about stored procedure you need to remember is stored procedures
do not return any out value. स्टोर्ड प्रोसीजर को हम डेटा दे सकते हैं पर वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. तुम सबने फंक्शंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट? सो फंक्शन में हम लोग रिटर्न लिखते हैं. रिटर्न मतलब ए और बी हमने पास किया, सम कैलकुलेट किया, रिटर्न सम. So we use the return statement. But in stored procedure there is no concept of return statement. हाँ, तो करेक्ट. तो void आप बोलोगे या उसका रिटर्न आप कुछ होता ही नहीं है. You cannot return anything. बट अगर ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे डेटा चाहिए स्टोर्ड प्रोसीजर से, तो हम कैसे लेंगे डेटा? सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द आउटपुट पैरामीटर कॉन्सेप्ट. तो हम खुद एक पैरामीटर पास करेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर को. सो दिस इज माय स्टोर्ड प्रोसीजर. टू दिस स्टोर्ड प्रोसीजर वी विल पास सम डेटा, लेट्स से x. सो x जो वेरिएबल है स्टोर्ड प्रोसीजर उसमें अपना वैल्यू राइट करेगा. So when we read x, we will get the particular value. That is the idea. आ रहा है समझ में? हम एक वेरिएबल बनाएंगे x और हम उसको किसको देंगे? स्टोर्ड प्रोसीजर को. Stored procedure will type or will put some data into this x variable. So when we read x, we will get the result. Got it? So let's do this. So here we will have say @sal int, but this time we have to write it as output parameter. तो अब इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. Everything will remain the same. The only thing is I have changed this sal variable to output. So first, let me just compile this stored procedure. So it has been compiled successfully. Now you can see here how to create the output parameter @sal int output. Now execute करते समय हमें output parameter pass करना पड़ेगा. So we have to create that output parameter. So declare @sal as float. Okay, and now we will execute my procedure. Suppose 1 I am passing and you have to write @sal. लेकिन पास करते समय भी आउटपुट लिखना कंपलसरी है. इधर भी लिखना पड़ता है, हाँ, नहीं तो आंसर नहीं आता है. So once the stored procedure is executed, your @sal will have the result. So now you can write print @sal to get the result. So let me execute these 3 lines. Can you see the output here? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको आउटपुट पैरामीटर कॉन्सेप्ट? Now let's see the next one, that is suppose both in and out concept I want. ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने डेटा ले लिया एंड क्या एग्जांपल लूं उसके लिए, एक मिनट. लेट मी ऐड डेटा. एक मिनट. सिंटैक्स इसमें शायद इन आउट नहीं है या कुछ, तो ऐसे याद आ रहा है मुझे. एक मिनट. पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर नहीं है शायद इन आउट. ठीक है, इसको छोड़ दो, मैं एक बार क्रॉस चेक करके बताती हूँ. But just remember that this is also a type of parameter which can be used for read and write both. Okay. So this was the stored procedure concept. बाद में फिर हम C# से जब कनेक्टिविटी देखेंगे तो फिर उसमें फिर बहुत सारे stored procedures create करेंगे. ठीक है, as per the need. Till this point, if you have understood, please type U for understood.
Now there is one more topic which was not given in the syllabus, but I will cover that because that is important. There is a concept called as functions. So functions are little bit similar to stored procedure, as in जैसे हमने stored, like the way we use stored procedure, we club the different statements together, right? Similarly, in functions also we can have different statements grouped together as one unit. But the important difference is, as we said, stored procedure does not return anything, correct? Stored procedure do not return anything, whereas functions must return a value. So it is compulsory that a function must return a value. That is important. That is one thing. Another difference is stored procedures are mostly used for performing DML operations. Okay, but we do not use functions for DML operations. Here only select operation is done. समझ में आ रहा है? Whenever means when do we create a stored procedure? When we want to go ahead and make some changes into the database, that is where we need to create the stored procedure. But there will be some situation where we just want to fetch the value and we want to observe the value. That is where we should use the functions concept. Got it? So this is again a very commonly asked interview question: difference between stored procedures and stored functions. So let's see how to create a function in SQL. So create function, say display data is the name of the function, suppose, as select star. Acha. As I said, display say count. So here we can use declare @count integer. एक minute. Syntax I need to check. Returns return type ये तो ठीक है, as declare return. Almost I am writing correctly, right? Begin लिखना जरूरी है क्या? Okay, so just समझ में आया? Stored procedure जैसा ही है almost syntax, but the only thing is when you say create function, you specify the name of the function. Here you have to mention the return statement कि ये function किस type का data return करेगा. So we are saying it returns an integer. As now I am going to return the count, right? So declare begin @count integer. So this is one variable I have created. Whatever is the count of employees, we are storing it here from EMP, and return @count. So we are returning the count here. So once the stored procedure is done, how do we execute it? Here we call it using the select statement. So select display.
तो अभी फंक्शंस को कॉल करते समय ना dbo डॉट ऐसा लिखना पड़ता है. So here we will be writing display count. Simply you will call it like this. Can you see the output, everybody? 13 is the output. आ रहा है समझ में? Select state. We called the stored procedure. We said execute. यहाँ execute नहीं लिखना है, select लिखना है. And dbo dot. Without dbo dot, I am not sure if it will run. हाँ, वो नहीं run होता है. So we have to write it as dbo dot. So it is, dbo means database object. So this is how we need to call the function. नहीं तो वो इनबिल्ट फंक्शन जैसा सोच के उसको अपनी इनबिल्ट लाइब्रेरी में ढूंढने लगता है. ठीक है. सो डीबीओ और यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए ऐसा कॉल करना है. So let's take another example. Suppose I pass the ID and I am telling you give me the salary of that employee. So what I'll do? Create function get salary. Suppose that is what I am trying to pass. अभी मैंने पास क्या किया? ID integer, but what I am expecting returns float. The salary is float as. So here we have to use the begin and end keyword. Select. अब salary के लिए declare @sal as float. So select @sal is equal to salary from emp where eid is equal to @id. And now I will say return @sal. Got it, everyone? ये समझ में आ रहा है आपको? We are using get salary method. We are passing the ID here and we said it returns a float. Okay, begin. First we declared the salary variable here. Select @sal salary. So this salary will be stored in this sal. From EMP we give this condition and we are saying you give me that particular salary. So how to execute? Select, sorry, get dbo dot get salary and you have to pass the ID here. So let's say I pass the ID as 1. So for the ID 1, this is the salary. आप यहाँ पे as salary लिखो. So you can see that output is coming up like this. Now the interesting thing is we can call this method in a different way. I can pass here EID from EMP. ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. Interesting. So those many times it is calling the get salary method. जितने भी एम्प्लॉय की आईडी है उसके लिए वो इंटरनली फॉर ईच लूप जैसा चलाएगा. So now what I will do is, let's say my requirement is I want to change the salary of all the employees. But the point is that I have a condition here. What is my condition? If the salary is less than 25%, I will increase by 10%. Otherwise, I will increase by 20%. That is the condition. So rather than updating the salary, I want to first of all observe the salary. मतलब मुझे ओल्ड सैलरी भी देखनी है और मुझे न्यू सैलरी भी देखना है. मॉडिफिकेशन के बाद कितना है. So after modification, when we see it, then I would take a decision whether I should actually go for updating it or not. Are you understanding what I'm saying, everybody? हमें क्या करना है? हमें अभी मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर लिखा था, है ना? हमने लिखा और हमने डायरेक्टली मॉडिफाई कर दिया. तो कभी कभार क्या होगा, मॉडिफाई करने के बाद मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है. सो देन आई विल हैव टू रोल बैक द चेंजेस. सो बेटर पहले हम देख लेते हैं ना भाई, चेंज करने से पहले एक बार देख लेते हैं कैसा है. अगर अपने को ठीक लगेगा तो हम चेंजेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. सो फॉर दैट वी कैन क्रिएट अ स्टोर्ड फंक्शन. सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. क्रिएट फंक्शन get new salary @id in
almost it will be like this only. So let me copy it. So first of all, we got the salary. Now we are going to put a condition if @sal is less than 25,000, then set @sal is equal to @sal multiplied by 1.1, else this is for 20%. मॉडिफाई हो गया, अब उसको हम रिटर्न करेंगे मॉडिफाइड सैलरी. सो रिटर्न @sal. So we are not calling the update statement, we are only returning the modified salary. Are you getting this? हमने सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया and that modified salary we are returning to understand what is the output. So now let me compile this. And now when I try to call it, so how to call it? Select salary. So this is as old salary, comma. What is the name of the function? dbo dot so can you see the output everyone? कि ये सारा old salary हो गया, ये सारा new salary हो गया. So I can observe the new salary. After increment, what will be the new salary of that employee? And then we might decide whether we should go for it or we should not go for it. आपको difference देखना है तो आप difference भी देख सकते हो. So it is also showing me the total difference. कितना actually increment होगा salary. Understood? Everybody is clear till this point? Okay. So once we are done with this part, now we will go for the database connectivity using C#. So see, what is the thing we have? We have our C# application, right? So this is our C# application, and we are going to interact with the database. So this is our SQL Server database. So our requirement is to establish the interaction between these two. Correct? That is what we want to achieve. So whenever we want to establish the connection between two different applications, देखो C# अपना Visual Studio एक अलग application रहेगा, separate exe. SQL Server is a different application. So can I say, if you observe it from the operating system perspective, this is our RAM, suppose. So on the RAM, operating system is already one unit present. This is our operating system, suppose. The C# application is another application and SQL Server is another application. ऐसे दो applications है अपने पास. So this is our SQL Server and this is our C# application. So when we want to establish communication between these two, so basically we are crossing the process boundary and then we are establishing the communication. Are you understanding? So in C# or in .NET, I should say, there are two types of connectivity we can have, or we can have. This is achieved using ADO.NET.
This portion is known as, means having the connectivity between C sharp and database. It is termed as ADO.NET. ADO stands for Active X Data Objects. So what is the purpose of these ActiveX data objects? They are used to cross the process boundary and establish the communication with the database. So we have a bunch of classes, methods, etc. that will be used for establishing the communication. So in this ADO.NET, we have two types of architectures. One is the connected architecture and the other one is disconnected architecture. So first let's understand what are these connected and disconnected architecture. So if you want to understand connected architecture, it is similar to the way you make a phone call to somebody. आप किसी से बात करते हो तो you make a phone call, right? So when you call the other person, can we say between you and the other person, ये आप हो समझो, this is you, this is the other person. So there is a connectionship. If you are talking between you and the other person, one channel kind of thing is being reserved. So whatever you are speaking, it is going to the other person and coming back to you. So a channel is reserved between you two people. आ रहा है समझ में आपको? अगर if you want to establish a connection between two entities, you want to send and receive the data, what are we saying? Let's establish a connection, let's have a channel. इसको हम क्या कह सकते हैं? Channel. So there is a channel reserved between the sender and the receiver, right? तो इसके थ्रू हम डेटा उसको सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं. जब तक ये चैनल रिजर्व्ड है तब तक आप सेंड करो, रिसीव करो. द मोमेंट दिस चैनल इज ब्रोकन, देन वी वोंट बी एबल टू सेंड और रिसीव द इंफॉर्मेशन. सो दिस इज नोन एज कनेक्टेड आर्किटेक्चर. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अगर मुझे, मतलब मेरा डॉटनेट एप्लीकेशन है और जो अपना अदर एंड का एप्लीकेशन है, सपोज एक दो एंटिटीज है ना, एक डॉटनेट एप्लीकेशन है, एक डेटाबेस है. दोनों के बीच में अगर अपने को कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रखना ही पड़ेगा, तभी आप डेटा सेंड और रिसीव कर पाओगे. अगर कनेक्शन टूट गया तो डेटा सेंड और रिसीव नहीं होगा. दैट इज नोन एज द कनेक्टेड आर्किटेक्चर. दिस पार्ट इज क्लियर एवरीबॉडी? मीनिंग समझ में आ रहा है? देन वी हैव द अदर वन विच इज डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर. अब डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल, आप सब व्हाट्सएप यूज करते हो ना? कभी कभार ऐसा होता है क्या कि हम समझो अभी मैंने नेट ऑन नहीं किया, मीन्स आई एम नॉट यूजिंग द इंटरनेट राइट नाउ, बट स्टिल आई वांट टू सेंड सम मैसेजेस, सो आई मे जस्ट स्टिल गो अहेड एंड टिक ऑन, मतलब जो जो मुझे मैसेज भेजना है हम भेज के तो रख देते हैं. इट वोंट बी सेंट, इट विल से इंटरनेट इज नॉट देयर, जो भी मैसेज आएगा. द मोमेंट आई गेट कनेक्टेड विद द इंटरनेट, एट दैट टाइम द मैसेजेस विल बी सेंट, करेक्ट? So something similar to that is used in a disconnected architecture. So what is the concept of disconnected architecture? This is our suppose this is our database. ये है अपना database. Okay, we have our database and this is our application. So the idea behind disconnected architecture is that I will appoint some person. मैं एक आदमी, एक person को बुलाती हूँ और मैं उसको बताती हूँ
whatever data I want. So I will tell this person what all information I want. With this information, this person will go to the database. जो जो मुझे डेटा चाहिए वो क्या करेगा, एक कंटेनर लेके जाएगा खुद. दिस पर्सन विल कैरी अ कंटेनर. जो भी उसको डेटा चाहिए, ही विल फिल दैट कंटेनर विद दैट डेटा एंड कम बैक विद दैट कंटेनर. यहाँ पे वो वापस आ जाएगा उस कंटेनर के साथ, उस डेटा के साथ. अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रही है सबको? सो नाउ कैन आई से माई एप्लीकेशन गॉट द डेटा विच इट वांटेड. जो भी डेटा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया. नाउ देयर इज नो नीड टू हैव अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड द डेटाबेस. अब हम क्या करेंगे, वट एवर चेंजेस आई वॉन्ट आई विल कीप डूइंग इट ऑन दिस कंटेनर. जो भी मुझे चेंजेस चाहिए वो हम इस कंटेनर में करते चले जाएंगे. समझ में आ रहा है आपको ये? अभी जो भी चेंजेस करना है वो हम कहाँ कर रहे हैं, अपने पास जो लोकल कंटेनर है उसमें कर रहे हैं. ठीक है, अब मेरा सारा काम हो गया, आई एम डन. नाउ अगेन आई विल कॉल दिस पर्सन एंड आई विल से आई एम डन नाउ, यू टेक दिस एंड गो बैक टू द डेटाबेस एंड परफॉर्म द चेंजेस ऑन द डेटाबेस. That is the idea of disconnected architecture. Is that clear, everyone? आ रहा है सबको समझ में कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट? अब नो नो, नॉट थर्ड पार्टी. We have the libraries in .NET itself to do this task. But the point is that we are not having the channel reserved all the time. That is the idea of disconnected architecture. So this disconnected architecture is very unique to .NET. ये जावा में भी नहीं है, पाइथन में भी नहीं है, this concept. Okay, so here we have a library, we have the classes available which will do this job for us. So we don't have to hire any third party library. Okay, so first we will go ahead with the connected architecture concept. Okay, so when we are going for connected architecture, there are a set of steps that we need to perform. So we will be using one library using system.data.sql client. That is the library we need to use. And okay, वो बाद में लगेगा, तब देखेंगे. So that is step number 1, I should say. Then we have the step number 2. So we will now need a bunch of classes. So there is one class, that is SQL connection class we will require. SQL command class is needed. So what is the purpose of SQL connection class? And there is one more thing that will come into picture, that is called as a connection string. So as I said, we are going to use the database. ये हम database use करने जा रहे हैं. तो जब हमें क्या करना होगा, अब ये हमारा .NET का एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन से डेटाबेस से अपने को कनेक्ट करना है. ठीक है, ये अपना रिक्वायरमेंट है. तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि डेटाबेस कहाँ पे है. जैसे मैंने बोला वो आदमी है, उसको भेजेंगे हम. सो वेयर इज द डेटा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट, वेयर इज द डेटा. क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, वी हैव टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ आवर .NET एप्लीकेशन एंड गो एंड लुक फॉर द डेटा. तो उसके लिए वेयर इज द डेटा. सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. सो मशीन नेम इज नीडेड और द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन इज नीडेड जहां पर वो डेटाबेस है. सेकेंड इज नेम ऑफ डेटाबेस. एंड थर्ड इज
क्या बोलते हो आप उसको, आइडेंटिटी बोलूं या क्या बोलूं मैं, मतलब आइडेंटिटी यानी कि जैसे आप डेटाबेस पे लॉगिन करते हो ना, सो यू नीड टू स्पेसिफाई द यूजर आईडी पासवर्ड। तो अभी तक, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे देखो, वी डायरेक्टली ओपन एसक्यूएल सर्वर एंड वी जस्ट वेंट फॉर, ऐसे कनेक्ट करके हम यहाँ पे जा रहे हैं, राइट? यू कैन सी दिस एवरीवन, right now on my system you can see this windows authentication. What is the meaning of windows authentication? Windows authentication का मतलब है I logged in to my PC, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉग इन किया है, इसलिए एसक्यूएल सर्वर बोलता है तुमको अलाउड है, तुम आ सकते हो यहाँ, बिकॉज ओएस नोज यू सो आई विल अलाउ यू। दैट इज कॉल्ड एज विंडोज ऑथेंटिकेशन। Windows operating system has done my authentication. I am a valid user for my operating system. So SQL Server says you are valid user here also. You can connect here. ये समझ में आया Windows authentication? Everybody? Sometimes it might be SQL Server authentication. आप बोल रहे हो नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करना है, सो आई विल हैव टू टाइप द यूजर आईडी पासवर्ड इन दिस केस, लाइक दिस, और फिर मैं कनेक्ट बोलूंगी। सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस वी माइट हैव। समझ रहे हो? उसको हम आइडेंटिटी का नाम दे रहे हैं, या तो विंडोज ऑथेंटिकेशन होगा या मुझे यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। So these are the three informations which are needed to establish connection to the database. ये इंफॉर्मेशन हम देते हैं किसके थ्रू? कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाना है? सो वी माइट हैव अ नॉर्मल स्ट्रिंग, कॉन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, in a pair of inverted commas, server name is equal to, you can just put a dot to specify we are using the current machine. अगर कोई और मशीन है तो वहां पर उसका आईपी एड्रेस और उसका जो भी नाम रहेगा वो रहेगा, सेमीकोलन। द नेक्स्ट थिंग इज इनिशियल catalog. So initial catalog is actually the name of the database. So in my case it is Armstrong, semicolon. And here we are going to write integrated security is equal to true. This means I am using the Windows authentication mechanism. Are you all understanding this, everybody? ये तीन चीजें, एक नॉर्मल स्ट्रिंग बनाना है जिसमें पहला ऑप्शन जो हम दे रहे हैं वो है सर्वर नेम। सो आई जस्ट पुट अ डॉट ओवर हियर, डॉट डालो या फिर ये नाम डालना है, दिस नेम यू हैव टू, डॉट डालो या फिर ये नेम, करंट मशीन के लिए डॉट दिया तो चलता है, सेमीकोलन, इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू आर्मस्ट्रॉन्ग, सेमीकोलन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू। सो व्हाट डज दिस मीन? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब होता है आई एम यूजिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन। Okay, I'm going to use Windows authentication. Is it clear, everybody? Now, using this information, we need to, as I said, अगर क्योंकि हम कनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो हमें हमारे और एप्लीकेशन के बीच में एक चैनल रिजर्व करना पड़ेगा। So let me go to Visual Studio and write the code for that.
Okay, so as I said, using system dot data dot SQL client is the library that we need. जब मैंने ये कोड लिखा था, अभी मैंने फ्रेश इंस्टॉल किया ना विजुअल स्टूडियो, सो इट वाज गिविंग मी एरर. Okay, so that means this library was not added into my, what do you say, software, जो भी बोलो आप. So what you have to do in that case, तुमको भी error mostly आएगा अगर तुम first time install करके कर रहे हो. So this line will give you error, this library is not available. So what you have to do is go to your solution. Just a minute. ये वाला साइन नहीं, कौन सा था? Just give me a second. Huh? ऐसा ऑप्शन, हाँ सॉरी, ये तुम्हारा सॉल्यूशन दिख रहा है ना, उसी को राइट क्लिक करो एंड देयर इज एन ऑप्शन व्हिच सेज मैनेज NuGet packages for the solution. Can you see everyone? दिख रहा है सबको? See, this is your solution, right? Right click on your solution, manage NuGet packages, उस पे क्लिक करना है. And here you have to search for the one I just now told you, system.data.sql client. उसको सर्च करो. आई हैव ऑलरेडी एडेड, तो वो आएगा नहीं अभी, लेकिन तुम्हारे मशीन पे आएगा. ठीक है, उसको क्लिक करना और ऐड कर देना, तो वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो जस्ट दिस स्टेप यू नीड टू परफॉर्म. यहाँ तक सबको समझ में आया? एवरीबडी इज ओके टिल दिस पॉइंट? So as I said, the very first step that we have to do is SQL हाँ, ये एरर आ ही रहा है ना अभी भी. ठीक है, मुझे करना ही पड़ेगा. देखो ऐसा एरर आएगा. सो मैनेज NuGet पैकेजेस system.data.sql client. हाँ, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना था. हाँ, सो कैन यू सी दिस? व्हेन यू ब्राउज यू कैन सी द फर्स्ट वन कमिंग अप. उस पे क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? हाँ, ये इसको चेक कर दो एंड इंस्टॉल, अप्लाई, आई एक्सेप्ट. Okay, once this is done, now you can see that error is gone. Is that okay, everyone?
and just we will use con.open. Con.open is used to reserve the channel. Reserve the channel. And con.close is used to release the channel. हमारा काम हो गया तो हमें immediately क्या करना चाहिए, चैनल को रिलीज करना चाहिए. So let's where it is saying. Let me just execute this. सर्वर नेम में नहीं है, सॉरी डेटा सोर्स नेम है शायद यहाँ पे. तो आज के दिन आप लोग इतना बस करके रखना कि जस्ट ट्राई टू राइट दिस कोड. एरर आएगा मोस्टली. सर्वर नेम में डेटा सोर्स में डेटा सोर्स. So now there is no error. So this is the perfect code. तो आप सब इतना बस अपने मशीन पे ट्राई करके रखोगे, ठीक है. सो टुमारो वी आर गुड टू गो. कल हम ये करेंगे, ठीक है. ये सब इतना सेटिंग सब रेडी करके रखो. ऑलराइट एवरीवन. Okay, so we'll stop here for today. We'll continue with database connectivity tomorrow.